सो सर्विस में एक जनरल रूल है, एक 10 अलग स्पेसिफाइड रूल है। सो 10 अलग स्पेसिफाइड रूल क्या बोलता है कि अगर ये हुआ तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी दिस, और अगर इन 10 में से आपका सिचुएशन नहीं है तो प्लीज गो एंड फॉलो जनरल रूल, राइट? तो व्हाट डज द जनरल रूल सेज? Supplier and the recipient both are in India. Registered person, then POS is the location of the recipient. अगर मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा हूं और वो जनरल कैटेगरी में आता है, तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इज द POS. If unregistered, then is the address available? Is the address available? If yes, then location of the recipient again. If the address is not available, then the POS will be the location of the supplier. So अगर मैं एक unregistered party को सर्विस दे रहा हूं, voice breaking, friends, so sorry if the voice is not clear, but I don't know. Let me check. No, couple of participants are having issues, right? So friends, I will try to be more loud if that can help. Okay. Thank you. So we can start. The guy who is having issues is okay. We can start, right? So जनरल रूल क्या बोलता है कि आज के दिन में अगर आप रजिस्टर्ड को दे रहे हो तो द POS विल बी दैट. अगर अनरजिस्टर्ड को दे रहे हो, उसकी एड्रेस है, तो POS विल बी द एड्रेस. अगर अनरजिस्टर्ड को दे रहे हो सर्विस और उसकी एड्रेस में नहीं है, तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर विल बी द POS. एंड if either of the supplier or the recipient is outside India, that is section 13, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर location of the recipient is known, then POS is the location of the recipient. If not known, the location of the supplier will be the place of supply. We'll discuss. It's a very general slide, very general rule to start the momentum, right? So let's now talk about what is the location of the supplier and what is the location of the recipient. Friends, if you, I would like you to note, section 271 talks about location of the supplier of service. There is no definition in the act of location of supplier of goods. It is very specific, location of the supplier of services. So let's see the scenario. इसमें भी क्या है कि first condition, if it is not fulfilling, then only you can get into the second condition. If not, then only you can come to the third condition. वैसे है, right? So where a supply is made from a place of a business from which the registration has been obtained. अगर मैं अपने registered office से आपको supply of service कर रहा हूँ, then the location of the such place of business. Right now I am not talking about POS. Right now I am talking about one of the element, that is location of the supplier. Location of the supplier. Second scenario, where a supply is made from a place other than the place of business for which registration has been obtained, a fixed establishment elsewhere. The location of such fixed establishment. So might be in the first scenario, Abhishek is giving consultancy service from his Kolkata head office. In second scenario, it might be I have a branch in Delhi, and from Delhi I am conducting your audit. So second scenario could be example. Third, where a supply is made from more than one establishment, whether the place of business or fixed establishment, then the location of the establishment most directly concerned with the provision of the supply. So मैं 8-10 जगह से आपको सर्विस दे सकता हूँ, right? Then the location of the establishment जो most directly connected है आपके supply से. All others, in absence of the such places, the location to the usual place of residence of the supplier. Copy paste of service tax. Right? So all others is अगर कुछ भी नहीं दिखा हुआ है, the location of the usual place of residence of the supplier.
तो मेरे रेसिडेंस में आप आ जाओगे कि माना जाएगा कि वही लोकेशन ऑफ द सप्लायर है, लोकेशन ऑफ द सप्लायर है। यहां पर मैंने जिक्र किया था सेकंड सिनेरियो में, व्हाट इज फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट। तो फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट मींस a place other than the registered place of business which is characterized by what? Sufficient degree of permanence, sufficient degree of permanence and suitable structure in terms of human and technical resource to supply service to or to receive and use service on its own needs. Friends, connected with the registration, right? तो फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट जरूर है, प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, बट यहां पर क्या बोल रहा है? लोकेशन ऑफ द सप्लायर के बारे में बात कर रहा है। सो लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज वन ऑफ सेकंड क्राइटेरिया फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट। फ्रेंड्स, मैं आपको आगे बढ़ने के पहले दो चीज समझाऊं। रजिस्ट्रेशन इज डिफरेंट एम्बिट एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज डिफरेंट एम्बिट। रजिस्ट्रेशन वो है कि आपको रजिस्ट्रेशन कहां पर लेना है, ये पर्सन लायबल टू गेट रजिस्टर्ड सेक्शन 22 में बता रहा है कि जब प्लेस ऑफ बिजनेस जहां से आप सर्विस दे रहे हो, राइट, फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। प्लेस ऑफ सप्लाई बताता है कि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है तो एक्चुअल में कंज्यूम कहां हो रहा है, राइट। तो ये दोनों एम्बिट बहुत डिफरेंट है। व्हेनेवर यू आंसर अ क्वेश्चन, प्लीज अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इज ऑफ registration or is pertaining to the place of supply. Both are different terminology, different ambit, right? People often get confused between these two. Next is the location of the recipient of the service, right? So where a supply is received at a place of business for which the registration has been obtained, then the location of such place of business. Where a supply is received at a place other than the place of business for which registration has been obtained, the location of such establishment. Where a supply is received in more than one establishment, then the location of establishment most directly concerned with the receipt of the supply, and in absence, the residence of the recipient. The residence of the recipient. And this is really important in the following, in the future slides. That's the reason I am discussing the location of the supplier and the location of the recipient of services is defined in the law. Now let's discuss the general law, जो अपने पहले डिस्कस कर चुके हैं। For supply of any other services, the general rule, the place of supply is registered recipient, then the location of the recipient. If not registered, then the location of the recipient if the address is in the supplier records, and if the address is not available, then the location of the supplier will be the place of supply. The location of the supplier will be the place of supply. Now we are stepping into the specific services, right? The first one is 12 subsection 3, that is immovable property, right? So services directly in relation to immovable property, grant of rights, constructions, use, accommodation, marriage, letting out, architect, surveys, etc., boat, vessel, lodging, club, etc. Ancillary service to the above. Ancillary service, मैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दे दिया कनेक्टेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, 213 में आ जाएगा। The POS will be the location of the property or a boat or a vessel. If the property is outside India, then the location of the recipient. You and I both in India, you are saying that I have a property in London, I want that to be painted. So the place of supply will be the location of the recipient, right? So 12.3 talks about services related to immovable property. We'll discuss more on this, right? Let's cover 12.4, that is restaurant and catering service, personal grooming, fitness, beauty treatment, health service, including cosmetic and plastic surgery. So yeah, sab pe the POS will be the location of actual performance. Location of actual performance. It means restaurant and catering service. Restaurant and catering service. If you invite, ma'am, the POS provision for the entire services is copy paste of service tax. When both the parties involved from in India,
and either of the party outside India. In all the scenario, it is copy paste of service tax. So आप आज के दिन में एक रेस्टोरेंट सर्विस यूज कर रहे हो, सो वो आपको हमेशा CGST SGST चार्ज करेगा, राइट? ITC Limited might be registered in head office in Kolkata, right? But Mumbai ITC hotels will always charge you CGST SGST of Mumbai also only, because वो रेस्टोरेंट सर्विस दे रहा है आपको. तो place of actual performance. Now let's discuss few things on 12.3, that is immovable property. Provided that if the location of the immovable property or a boat or a vessel is located or intended to be located outside India, the place of supply shall be the location of the recipient. We discussed this, right? Again, where the immovable property or a boat or a vessel is located in more than one state, the supply is treated as made in each of the respective states or UT in proportion to the value of the services separately collected or determined in terms of contract, and in the absence as we prescribe. What it means is, आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया कि अभिषेक मेरे पास प्रॉपर्टी लोकेटेड है इन बिहार, इन झारखंड, इन महाराष्ट्र. आई वांट दैट आपका सिक्योरिटी गार्ड इस तीनों प्रॉपर्टी में जाके खड़ा रहे, राइट? I want security service from Abhishek in Kolkata at this 3 premises. So I will be levying IGST because location of the supplier Bengal, place of supply where Bihar, Jharkhand and Maharashtra. So कौन से proportion में होगा? अगर contract में लिखा हुआ तो उस proportion में होगा, or else as may be the manner may be as per the agreement or as mutual understanding. यहाँ भैया आपको 3 सिक्योरिटी गार्ड लग रहे हैं महाराष्ट्र में और एक सिक्योरिटी गार्ड लग रहे हैं झारखंड में या बिहार में. So accordingly, right? So it will be IGST because location of the supply and the POS will be in 2 different states. Let's take 3 examples on this. So ABC Limited Builders located in Punjab is constructing a factory building for XYZ, who is located in Maharashtra, but the construction is happening in Gujarat. The POS will be the location of the property, that is Gujarat. So I will be levying IGST, Punjab से Gujarat. Mr. A, sales agent based at Maharashtra. So A बैठा हुआ महाराष्ट्र में, travels to Punjab for a business and stay in a hotel there. The place of supply will be place of hotel, that is Punjab. So पंजाब होटल वाला मेरे को चार्ज करेगा CGST SGST. क्यों? पंजाब जो होटलियर है वो बोलेगा भैया मैं लोकेटेड हूँ पंजाब में, मेरा POS पंजाब, आई हैव टू लेवी CGST SGST irrespective, unlike goods, irrespective आप महाराष्ट्र से आए हो, irrespective आपका GST महाराष्ट्र का है, मुझे तो पंजाब का CGST SGST चार्ज करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, राइट? थर्ड केस, Mr. A, a consulting engineer in Mumbai, renders professional service in respect of immovable property of Mr. B, Bangalore, जो लोकेटेड है US में. मैं उस प्रॉपर्टी पे काम कर रहा हूँ जो US में है, पर वो प्रॉपर्टी आपकी है, आप बैंगलोर में बैठे हुए हो. The POS will be Bangalore. I am in Mumbai. I will be levying IGST. Friends, coming back to the second example, जहां आप एक होटल में जा रहे हो दूसरे स्टेट में और आप CGST SGST पे कर रहे हो. फ्रेंड्स, नॉर्मली बिजनेस कोर्स में ये बहुत नॉर्मल सा बात है. अभिषेक कैन गो ऑलवेज टू मुंबई एंड स्टे इन अ होटल फॉर गिविंग अ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इन मुंबई. सो अभिषेक विल गेट अ इनवॉइस ऑफ CGST SGST ऑफ मुंबई 18% या 28%, वॉट एवर द सिनेरियो में भी, मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा. इज देयर एनी स्ट्रक्चरिंग पॉसिबल कि मुझे उस होटल का क्रेडिट मिल जाए? आई एम आस्किंग टू द पार्टिसिपेंट्स, इज देयर एनी स्ट्रक्चरिंग पॉसिबल कि मुझे CGST SGST ऑफ होटल ऑफ अनदर स्टेट का क्रेडिट मिल जाए? Somebody start.
No, not casual taxable person, because casual taxable person में there's a definition में लिखा हुआ है occasional. It's not occasional. Taking registration at Maharashtra and bill again to Punjab address, not possible, not possible. So what I recommend to my clients, is you book the hotel from a travel agent who is having an office in Bengal and an office in Maharashtra also. So friends, we have good number of travel agent clients to whom we have given this consultancy, and they have either opened a branch in respective states जहाँ उनका बेसिक काम होता है, or they have developed a ancillary agents sort of people जो उनको pass कर देते हैं. So I will explain how it happens. So let's say I am moving to Mumbai for a stay. So I call my travel agent in Kolkata and I say, "Bhai, book a room for me in Maharashtra." He calls his agent at Maharashtra. वो रूम बुक करवाता है अपने नाम पे 100 रुपया प्लस जीएसटी. वो मेरे एजेंट को बिल कर देता है 101 रुपया प्लस जीएसटी. मेरा एजेंट मेरे को बिल कर देता है 102 रुपया प्लस जीएसटी. तो मुझे 100 रुपया का रूम 102 रुपया जरूर पड़ता है, बट 18% जो जीएसटी है वो मेरे हाथ में आ जाता है, वो मैं क्रेडिट ले सकता हूँ. So this is the structure which we can think of and suggest our clients how to take the credit if they regularly travel and are not taking the credits of hotel bills, right? Anybody want to discuss something on this? Let's wait, someone is typing. Okay, if the booking is done by a yatra and all, so they are not going to pass you the credit because उनका भी registered office कहीं और होता है, and ultimately वो आपको होटल का वो अपना खाली कमीशन बिल देते हैं आपको, होटल वाला आपको अलग से बिल दे देता है. Okay, so what happened is a local travel agent books a hotel for me. He asked for the invoice at his name. He giving Maharashtra GST number. He gets an invoice 100 rupees plus CGST is to Maharashtra. That person invoiced to my travel agent in Bengal, and or else that travel agent can invoice me directly also. And what he will be giving me is hotel accommodation. He won't be invoicing me for accommodation. He will be invoicing me for arrangement of accommodation. So you can simply go and charge IGST. Friends, please understand, the place of supply is only related to immovable property. There might be a scenario, मैं आपको बहुत extend कर रहा हूँ इसमें, there might be a scenario कि होटल का रूम 12% रेट है, राइट? महाराष्ट्र का लोकल एजेंट बुक कराया, उसको 12% सीजीएसटी एजीएसटी लगा, उसने मेरे लोकल कोलकाता एजेंट को बिल बनाया 18%, वो वाला ट्रैवल एजेंट मेरे को बिल बनाएगा 18%. सो रूम का रेट 12% लग सकता है, ये 18% लगेगा बिकॉज माई एजेंट, द महाराष्ट्र एजेंट is supplying a service to a Kolkata agent, and the Kolkata agent is supplying service to me. That is arrangement of booking of accommodation, but not providing accommodation service, right? So is transaction के through I might take the credit of the hotel which I am losing till today, right? Let's discuss 3 more subsections, 5, 6, 7. That is supply of service of training and performance appraisals. So if the registered if the recipient is registered, then location of the recipient. If not, then actual performance जहाँ हो रहा है वहाँ पर. 12.6 admission to the cultural event or any amusement park. So इसमें venue of the event or the park is the POS, and organizing. See, 12.6 is the admission. 12.7 is the organizing. So organizing of the cultural event or any conference, if the recipient is registered, then the POS is the registered address of the location of the recipient. If not registered, then the venue of the event. And if event is outside India, then the location of the recipient, whatever it is in India, right? So that will be the POS. Okay. For
last point, that is conducting or organizing the event, where event is held in more than one state. मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि मेरी बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, तीनों जगह मेरी जो बुक आएगी वो बुक लॉन्च करना है. लॉन्चिंग ऑफ बुक इन ऑल द 3 states. So it will be event. So आपने मुझे बोला कि 3 लाख रुपए लगेगा, might be 1 lakh for each state. So the POS will be accordingly divided. A consolidated amount charged related to such event, the place of supply will be respective in a proportion, right? So we can move forward. Okay, so supply of service of transportation of goods, including by a mail or a courier. So if you are providing me a transportation service and I am a registered person, then my location of the location will be the POS. If I am not registered, then location where the goods are hand over for transportation. So मैं आपको बोल सकता हूँ कि सर मेरा माल महाराष्ट्र में पड़ा हुआ है, आप बिहार पहुंचा दीजिए. मैं बंगाल में हूँ, मैं रजिस्टर्ड नहीं हूँ. Then POS will be Maharashtra. But अगर मैं registered हूँ, then the POS will be Kolkata, Bengal, right? Passenger transportation. Similarly, if I'm registered, then my registration, my place where I'm registered, or else where the passenger embarks on the conveyance. Service by on board conveyance, first scheduled point of departure, जहाँ से वो जर्नी चालू हो रही है. फ्रेंड्स, जब अपने ये पढ़ रहे हैं ना, जस्ट डोंट थिंक और रीड कि हाँ ये मेरे ऊपर तो एप्लीकेबल नहीं है. थिंक ऑफ अ सिनेरियो कि आपके क्लाइंट के ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, एंड यू आर मिसिंग दिस पॉइंट्स व्हेन यू आर कंडक्टिंग जीएसटी ऑडिट, राइट? You should approach your clients. Let's have a health review. Let's have a monthly review, or let's have a health checkup, and ensure that whatever happening with the company or the organization is happening as per the provision of law or not. Or else we might lose or end up to a huge mess if we are not understanding or applying these provisions, right? This is very particular to our telecommunication industry. I will just go through. Supply of telecommunication service, including data transfer, broadcasting, DTH cable. So again, अगर fixed line जा रहा है तो location where the line is installed. अगर postpaid connection है तो billing address. अगर prepaid है तो location of the recipient if done through Paytm or internet. अगर आप shopkeeper से खरीद रहे हो, recharge करवा रहे हो, तो location of the shopkeepers, or through others where prepayment voucher are sold, that location. In cases not covered address of the recipients on records. So अगर आपका कहीं भी नहीं है तो अगर जो आपका record address है, मेरे पास last address है, that will be the POS. Where no address is available, location of the supplier will be the POS. So this was for the telecommunication industry altogether. Okay, for the banking industry, location of the recipient in supplier's record. If not available, then the location of the supplier itself. For insurance, same location of the recipient is the registered. If not registered, then location of the recipient in the supplier's record. Advertisement services to government. This is altogether very different. Friends, please take a note. Advertisement services to government is different, and advertisement service to others is not covered in 1214. 1214 only talks about advertisement to governments, right? Okay. So this is what we are talking about governments. Before going to this, friends, the following slides might be useful to you, might not be useful to you, right? I am discussing for a intent कि it might be useful to you. अगर मैं बोल दूंगा, आप सुन लोगे, कभी भी काम आएगा तो आपको याद आएगा कि हाँ ये वाला पीपीटी खोल के देखना है, right? So please have a patience. थोड़ा सा theoretical जरूर है, but might be important, right? सो न्यूज़पेपर में मैंने ऐड किया तो वो न्यूज़पेपर 3 जगह गया, मतलब 3 स्टेट में छपवाया, टेलीग्राफ ऑन ऑल 3 स्टेट्स. सो अकॉर्डिंगली POS वैसा होगा. प्रिंटेड मटेरियल लाइक लीफलेट, कैलेंडर्स, all services given to government. Then the value attributable or dissemination of advertisement in a state shall be the amount payable for distribution on a specific number of such material in a state. होर्डिंग्स लगे, अकॉर्डिंगली बिहार में 2 लाख होर्डिंग लगे, बंगाल में 4 लाख होर्डिंग लगे. एडवर्टीजमेंट प्लेस्ड ऑन ट्रेन्स, जो अपने देखते हैं, एडवर्टीजमेंट ऑन बैक ऑफ यूटिलिटी बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल के पीछे में एडवर्टीजमेंट आ गया,
right? So electricity is wrong example again. Whatever anything coming from government, उसमें कोई एडवर्टीजमेंट आ गया तो उसकी अकॉर्डिंग पीओएस बताया गया है. सो रेस्ट वी कैन गो थ्रू. इट्स all about advertisement service only specific to government, right? Now let's come to the twist of the day, that is where service एक आदमी either recipient or supplier, one of the party is outside India. So friends, what is import of service? तीन कंडीशन फुलफिल कर लीजिए, इंपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा. नंबर वन, supply of the service is located outside India, okay. Recipient in India, okay. The place of supply of service is in India. So अभी अपना जो पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट इसलिए रहेगा समझने के लिए कि पीओएस कहाँ है. अगर कोई भी कारण से पीओएस बाहर रह गया तो इट इज नॉट अ इंपोर्ट. अगर इफ पीओएस इंडिया में आ गया so it is import. Friends, I would like to all the participant to answer, if a transaction becomes a import of service, what the recipient have to do? If a transaction becomes a import of service, जो recipient है उसको क्या करना होगा? Okay. Now friends, go and think, have you paid for your Gmail domain any payment? Have you if either of you have purchased Zoom or GoToMeeting or ClickMeeting, which I have purchased, we have paid in dollars to a party outside India. Location of the supplier of the service outside India, recipient in India. Just मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ the POS in India. I have paid in dollars. I am liable to pay tax on reverse charge. So multiply this with your clients. आपके सारे clients का कोई ना कोई मेल अकाउंट है, Yahoo, Gmail, Hotmail, I don't know. They might have paid. उनकी एक बिल आई होगी जो फाइल में पड़ी हुई होगी, आपने कभी पूछा भी नहीं, आपने कभी देखा भी नहीं, आपने उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स पेमेंट करवाया ही नहीं. सो अगर वो इंपोर्ट क्वालिफाई करती है, आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, क्रेडिट नहीं ले रहे हो, अलग बात है. अगर मैं आपको बोलूं 2017-18 में यू आर लायबल टू पे टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एंड आपको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, तो आपको पेमेंट करना है विद इंटरेस्ट एंड विद पेनल्टी. सो इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया, रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना मैंडेट है. सो वी हैव टू गेट श्योर व्हाट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस. व्हेन दिस थ्री कंडीशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड, supplier outside India, recipient in India, okay. The place of supply should be in India. Then only it is an import of service. Let's go to export of service. Export of service में दो condition और addition है. Supplier of the service in India, recipient outside India, the place of supply outside India because export हो रहा है. Payment of such service has been received by the supplier इन कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी. अभी अमेंडमेंट आया नेपाल एंड भूटान के लिए कि इन इंडियन करेंसी भी चलेगा. एंड द सप्लायर एंड द रिसीवर इज आर नॉट मियरली, इसका मतलब क्या है, आर नॉट मियरली ब्रांच ऑफिस एंड हेड ऑफिस. एक ही कंपनी के मियरली सब्सिडरी एंड हेड ऑफिस ब्रांच ऑफिस नहीं है, राइट. सो अगर ये पांचों कंडीशन हो जाए तभी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा. फ्रेंड्स, जैसे अपने इंपोर्ट ऑफ सर्विस का बात कर रहे थे वैसे अपने एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का बात करते हैं. क्या होगा अगर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो गया तो? व्हाट विल बी इम्पैक्ट इफ अ ट्रांजैक्शन कन्वर्ट्स और टेंड टू बी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस? am I liable to still to pay the tax on export of service? क्या मुझे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस पे टैक्स पेमेंट करना है? Okay. So now I bring to you the first class definition, zero rated supply. मैंने आज के रेफरेंस में भी इसको लास्ट में दिया है रेफरेंस के लिए. So zero rated supply is a supply of is export and supply to SEZ.
So zero rated supply is different from zero rated supply. जो आपने 0% लिखा ना वो different है, zero rated supply different है. So when it is an export of service, it is a zero rated supply. Tick. Now coming to export of service, वो दो तरीके से हो सकती है, with payment of tax, without payment of tax. So the moment you qualify that it is an export of service, it is an option to you कि आप tax payment करो और फिर refund claim कर लो, and okay and आप tax payment मत करो and you export under letter of undertaking, you export under LUT and you choose not to pay tax, so there might be a service which qualify for export of service and your client is still paying tax on it. You might help them to save the working capital loss, right? Let's discuss more elaborately. I am discussing this very extensively because I need this in a later stage, right? So फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, ये छोटा सा होगा. So जनरल क्लॉज यही बोलता है कि अगर वो 13 सर्विस में नहीं आती अगेन, तो जनरल क्लॉज यही बोलता है कि लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विस, देन लोकेशन ऑफ द if the location of the recipient not available, then the POS will be the location of the supplier itself. So services when goods required to be made physically available by a recipient or requiring physical presence of receiver, person acting on his behalf, then the POS will be the location where services actually performed. So let's say आप जापान में हो, आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसके लिए आपको बेसिक कंसल्टेंसी चाहिए, राइट? जिसके आपके पास सॉफ्टवेयर है, आपको दिक्कत हो रही है, कोई बग आ रहा है एंड यू वांट माय कंसल्टेंसी. सो सर्विसेज व्हेन गुड्स रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल. So software will be the wrong example. Let's say a plant and machinery. So plant and machinery में मुझे काम करना है, right? You are outside India. Then the location where the services actually perform. If you are bringing that to India, then जहाँ पर होगा वो माना जाएगा. The moment you are bringing back to India, then the place of supply will be India. For making it an export of service, the place of supply should be outside India. I guess you are understanding what I'm trying to point out. If the plant and machinery आपने खोल खा के ले आया इंडिया में, then the place of supply will be location where the services actually perform. तो वो इंडिया हो गया. You are out of the definition of export of service. But अगर मैं जापान में जाके सर्विस दे रहा हूँ, then या मैं जापान में आदमी भेज रहा हूँ, then वो माना जाएगा बाहर का. It will be mandatory to be export of service. Services supplied directly in relation to immutable property, location of the property. Similarly to 12.2, इसलिए मैं यहाँ बहुत टाइम दे नहीं रहा हूँ. Rest all are similar to 12.2. Same parameters, everything same. Let's jump to the most important 5-7 slides. This I promised to discuss in the first class. I have discussed there the definition of agent. I have discussed there definition of intermediary. Now I am connecting this to what I have discussed in today's class. Intermediary क्या बोला है? Definition पढ़ते हैं फटाफट संग में. Intermediary means a broker, a agent, or any other person by whatever name called, who arranges or facilitates. खत्म. Who arranges or facilitates the supply of goods or service or securities between two or more persons, but does not include a person who supplies such goods or service or both or securities on his own account. वो खुद माल नहीं बेचता. सिमिलर चीज. एजेंट क्या होता है? अब मीन्स अ पर्सन इंक्लूडिंग अ फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, अर्थ या दल क्रेडिट एजेंट, an auctioneer or any other mercantile agent by whatever name called, who carries on the business of supply or receipts of goods or service on behalf of another. So intermediary and agent में difference है. Intermediary is defined in IGST Act
एजेंट इज डिफाइंड इन CGST एक्ट। अब अपने बात करते हैं 13 सबसेक्शन 8 में, ये प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन है IGST एक्ट का। ये क्या बोलता है? द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज शैल बी द लोकेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विस। लोकेशन ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विस, मैं सेक्शन 13 का बात कर रहा हूं, मतलब आइदर ऑफ द पार्टी इज आउटसाइड इंडिया। तो इसमें सेकंड केस में क्या लिखा हुआ है? इंटरमीडिएरी सर्विस। इट मींस इंटरमीडिएरी सर्विस हुआ, सो POS माना जाएगा, POS माना जाएगा। सर अगर इंटरमीडिएट सर्विस हुआ तो POS माना जाएगा किसका? लोकेशन ऑफ द सप्लायर, लोकेशन ऑफ द सप्लायर। तो यू हैव टू बी, अगर इंटरमीडिएट सर्विस नहीं हुआ, अगर इंटरमीडिएट सर्विस नहीं हुआ तो यू आर आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ 13(8), यू आर गोइंग टू अ जनरल क्लॉज, यू आर गोइंग टू अ जनरल क्लॉज जहां पर POS माना जाएगा आउटसाइड इंडिया, जहां पर POS माना जाएगा आउटसाइड इंडिया। इट मीन्स व्हाट आई एम कंक्लूडिंग, इट मीन्स अगर इंटरमीडिएरी सर्विस हो गया देन इट इज नॉट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। अगर एजेंट हो गया इट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। आई एम रिपीटिंग, ये लड़ाई सर्विस टैक्स का रेजिम में भी था, ये लड़ाई सर्विस टैक्स GST में बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट? आई एम रिपीटिंग, if I am providing a agent, I am playing a role of an agent for a company outside India, if I am playing a role of an agent for a company outside India, I am providing a export of service, I can go and file LUT, मुझे GST पे करने का दरकार नहीं पड़ेगा। If I am playing a role of an intermediary, if I am playing a role of an intermediary, the place of supply is the location of the supplier. If you go to export of service definition, point 3 says the place of supply of service should be outside India, but the moment I am an intermediary, the place of supply will be location of the supplier, that is in India. I am not fulfilling the condition of export of service. It means CGST SGST applicable. It means CGST SGST applicable. Friends, I have also quoted a case law, Toshnila Brothers. There are n number of advanced ruling on this point. जो भी आपके क्लाइंट है, जो भी आपके क्लाइंट है जिनको फॉरेन कंपनी से कुछ भी मिल रहा है, कमीशन, कंसल्टेंसी फीस, XYZ, मेंटेनेंस, वारंटी, कुछ भी मिल रहा है, पैसा, कोई पैसा मिल रहा है, वो ब्रांच कंपनी हो, वो सब्सिडियरी कंपनी हो, just go and check whether they are in the shoes of agent or they are in the shoes of intermediary. Trust me friends, 40 लाख का पेमेंट कराया मैंने क्लाइंट का, right? And you have to be dead sure for this. Foreign clients always pay you inclusive, 40 लाख पेमेंट कर दिया या डॉलर में पेमेंट कर दिया, they are not bothered with the Indian taxes. You will be questioned later on, right? तो please do take a note. इसलिए मैंने स्लाइड को इसमें 4 चीज डाला, इंटरमीडिएरी वर्सेस डेफिनेशन ऑफ एजेंट वर्सेस 13(8) प्रोविजन एंड द डेफिनेशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, राइट? So this 4 angle is very important to judge this. It's a very sensitive issue and across India इसके rulings against आ रही है SSC की. Anything if you want to discuss on this, I can discuss. Okay. Ma'am, intermediary is some. Acha, I'll give you example. So Abhishek in India, payment of service can be in INR of export of service. Ma'am, payment of service can be in INR of service only if you are dealing in Nepal and Bhutan. That's it. So coming to ma'am's question with the example of intermediary, आज के दिन में मैं बैठा हुआ हूँ इंडिया में और आप बैठे हुए US में, राइट? आपने सिनेरियो 1, आपने मुझे बोला अभिषेक go and promote my products and I will sell it to you, you sell it to others, or you sell on my behalf and I will give you a commission. So आप जितना प्रोडक्ट बेचोगे मैं उसके ऊपर कमीशन दूंगा। तो आप 100 में परचेज कर रहे हो, 100 में बेचो और मैं आपको कमीशन अलग से दूंगा।
So this is the case of agent, जहां पर agent is supplying goods on his own account. Whereas intermediary क्या करता है, आप यूएस में बैठे हुए हो, मैंने आपके लिए एक बायर खोजा इंडिया में, मैंने उस बायर को आपको मिला दिया. I have just facilitated or arranged the supply of goods or service by introducing you and introducing that buyer, ensuring that आपका वो माल खरीदेगा and सब कुछ होगा. तो I am not supplying anything. वो डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहा है, वो बायर जो है वो डायरेक्ट इंपोर्ट कर रहा है. I am just standing there as a person who is taking care of all the things, but I am not supplying, I am not invoicing. So I am an intermediary. So various money is coming to India to n number of parties as an intermediary, right? I guess I've cleared your doubt. So just hold on. Just hold on. So is LUT mandatory to file for export of service without payment of tax? So yes, if you are not having a letter of undertaking, you are mandatory liable to pay, do the export with payment of tax. That can be refunded later. So letter of undertaking is a mandatory. Okay. So friends, couple of 5-6 small important rulings. Then we can jump to question and answer session, right? So ITC of a CGST and SGST charged by a state will not be available to a person who is not having registration in that state. That we discussed in the previous slides. The supplier carries goods from one state to another and supplies them in a different state. Interstate supply माना जाएगा. This is a circular. Okay, this is a circular which we discussed earlier also. Circular 10/10 by 2017. ये वही वाला सर्कुलर जो मैं बता रहा था कि आपको हो सकता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन लेने का दरकार ही नहीं है. यू कैन सिंपली गो एंड टेक द प्रोडक्ट्स ऑन अप्रूवल बेसिस. अगर समझ में आया बायर को, यू कैन इनवॉइस देम फ्रॉम बंगाल इटसेल्फ चार्जिंग IGST. ओके, नेक्स्ट इज अ सर्कुलर बाय 3/1/2018. What it said, supply of goods before clearance from warehouse would not be subject to levy of IGST, and the same would be levied and collected only when the warehouse goods are cleared for home consumption from custom bonded warehouse. तो इसमें क्या बोला गया कि आप कस्टम बॉन्डेड वेयरहाउस से, मैं चाइना में आदमी को बोला कि भाई माल, चाइना इज रॉन्ग एग्जांपल ऑलटुगेदर राइट नाउ, कोविड-19, मैंने यूएस में बोला कि भाई तुम माल भिजवा दो. यूएस ने माल भिजवाया और कस्टम वेयरहाउस में पड़ा हुआ है. इट इज नॉट येट क्लियर्ड. मैं बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं किया. मैंने सर को बोल दिया, सर मैं आपको ट्रांसफर करता हूं, 8 करोड़ की माल है, आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर लीजिए. सो मैंने कस्टम वेयरहाउस से क्लियर कराने के पहले ही माल बिक्री कर दिया. दिस इज नॉट अ इंटीग्रेटेड सप्लाई, दिस इज नॉट अ सप्लाई ऑल टुगेदर. ये शेड्यूल 3 में कवर्ड है. नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस. हाई सी सेल्स आल्सो कवर्ड इन शेड्यूल 3, राइट? Okay, transaction between an entity located outside India and its project office located in India for execution of the project, intra-company affairs. As such, the salary paid to the employees of the company head office is a transaction classifiable in Schedule 3, not liable to GST. So this is cross charge in India versus outside India. In this double AR. In the case of Hitachi Power Europe GmbH, they have clarified that this is not a supply and आपको GST लगाने का दरकार नहीं है. It's a Schedule 3 item. CSTAT Delhi in the case of Samsung Electronics 2016 का केस है, held that the services had been provided to clients outside India. The performance was only on behalf of the client located outside India and hence export of service, right? So taking the previous era judgment, it will still be considered as a export of service. Okay, more couple of slides, I guess. So entity located outside India, basis the PO of the entity, delivers the goods to the place where the ship or a vessel of entity. Same, आप custom borders और territorial borders cross करने के पहले माल बिक्री कर देते हो. It's not liable to GST. In the case of Jotun India Private Limited, it was decided. In BAS, so high sea sales involve sales of goods in the course of import before such goods cross the custom frontier. Same
judgment was ruled by BASF India. So not covered in not treated as supply, schedule 3 item, GST not deliverable. Last two things: tender sales, as is where is basis, does not involve movement of goods, and therefore the location of such goods at the time of supply is a place of supply. Tender sales from Delhi, purchaser location Gujarat, location of the goods at the time of delivery UP, POS UP, tax payable IGST. In the second case, Delhi, all in Delhi, location and POS, इसलिए CGST, AGST, Delhi. E-auction of iron ores, wherein the purchaser should affect the movement of goods, does not involve movement of goods, and therefore the location of such goods at the time of supply is the place of supply. So this were the few important advanced rulings and the clarifications which are not connected with the provisions, because that time it would be heavy. So I've kept it for last.